Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to solve another LeetCode SQL problem, which is the big countries. Okay, so this question is frequently asked in SQL interviews, and we will understand through this question like where clause or operator, filtering the records and selecting the specific column, something like that. So in this video, I will explain everything step by step in a very simple way. So let's get started. So problem statement, as you can see, the problem give us the table which is the word. Okay, this is the table which is give us to the name of the table is word. We need to find all the countries that are considered the big countries. We need to return the country, okay, which are considered as a big countries. Okay, so what is the big country? What does it mean? So big country means that if the country follow any one of the condition. Okay, if any one condition is true, then we will consider this country as a big country. It means that according to the problem, a country is a big if the area is greater than 3 million square kilometer and the population at least 25 million. Then if any one condition is true, the country is considered as a big country. As simple as that. So in our table, as you can see, there is a name, continent, area, population and GDP, but we need to focus on a name and area and population, because in the final output, as you can see, we need to return the name, population and area. Okay, so what is the question ask? Question ask the name, population and area. Okay, so let's understand the example which we have to given like this. In this example, as you can see, first area is this. Okay, 6,52,230 square kilometer, and population is 25 million, something like that, which is the greater than 25 million population. So condition is true, and we will including the Afghanistan in our final output. Okay, now let's move on to the next one, which is the Albania. Second country is the Albania. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल चेक, हम लोग क्या चेक करेंगे, लाइक एरिया चेक करेंगे, विच इज द 28748. वी विल चेक दिस कंडीशन. इसको चेक चेक करेंगे, लाइक इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लाइक नो नो, दिस इज नॉट greater than equal to 3 million square kilometer, something like condition is false. Now we will check the second condition like this, the population. Okay, is population is greater than equal to 25 million? No, condition is false. Then do not include because both the condition are false. Okay, no need to uh, add in our final answer. Okay, got it. Move on to the next one, which is the Algeria. For the Algeria, continent Africa, and we will check the condition, which is the 2381741. Is the area is greater than 3 million square foot? Okay, yeah, yeah, and this population is greater than, no no, area is not a greater than 3 million square kilometer, but population is greater than. So that's why we adding the Algeria in our final answer. For the Andorra, population is also very small, like this. Area is also small, very small. Okay, so yeah, so this is the, like this is the our population and this is the area. Okay, so this is the GDP. So don't include in a, this is in our final answer. Okay, for the Angola, for Angola, continent is Africa, and we will check population is less than, and area is also less than 3 million. Okay, so both the conditions are false here, so we will not include the uh,
Angola in our final output. Okay, so this is the understanding of that example. Okay, so important observation that we need to understand here, like there is no, we don't need any join, group by, count, aggregate function, something like that. We directly use the बेयर क्लॉज. हम यहाँ पर डायरेक्ट बेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं. हमें यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कंडीशन या किसी फंक्शन को लगाने की जरूरत नहीं, लाइक ज्वाइंस, ग्रुप बाई. बिकॉज क्वेश्चन सिंपली हमसे पूछ रहा है, लाइक हमको वही कंट्रीज हमको रिटर्न करनी है जिनकी एरिया एंड पॉपुलेशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, देन वी विल रिटर्न दैट पर्टिकुलर कंट्री नेम विद पॉपुलेशन एंड एरिया. सिंपल एज दैट. ओके, सो द मेन लॉजिक, आई होप इट्स क्लियर. तो एक बार हम फिर से इसको मेन लॉजिक को इसको देख लेते हैं, लाइक एरिया इज ग्रेटर देन 3 मिलियन स्क्वायर फीट एंड पॉपुलेशन ग्रेटर देन 25 मिलियन. ओके, सो दो कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए. दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती, देन वी विल सिंपली रिटर्न अवर एट दैट कंट्री इन अ फाइनल आउटपुट. ओके, so this is the explanation of this example. So now let's write down the query part here for better understanding. Okay, now let's select name, population and area. Okay, from word where पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हम लोग इसको लिख लेंगे क्वेरी को, देन ड्राई रन करेंगे. और population is greater than equal to 25 million. Okay, let's run. ठीक है, तो ड्राई रन करते हैं इसको पहले. लेट्स सी हाउ एसक्यूएल इवेलुएट द रोज. ओके, फॉर अफगानिस्तान, पॉपुलेशन इन अफगानिस्तान इज दिस. ओके, 25 million, समथिंग लाइक दैट, विच इज ग्रेटर देन 25 million ना. दिस इज 25 million समथिंग कुछ है ना. और कंडीशन हमारी ये बोलती है कि अगर पॉपुलेशन 25 million, एटलीस्ट 25 million, मतलब 25 million इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए, लाइक 25 million भी रहेगी तो चलेगी. ओके, सो यहाँ पर 25 million से ओवर ही है ना. सिंपली हम लोग इसको कंडीशन को ट्रू एज अ ट्रू मार्क करेंगे एंड इस कंट्री का नाम हम अपनी टेबल में ऐड कर देंगे. ओके, अल्बानिया के लिए हम लोग जैसे ही चेक करेंगे, लाइक अल्बानिया के एरिया चेक करेंगे जो कि बहुत कम है, एंड पॉपुलेशन भी चेक करेंगे जो कि नहीं 25 million को नहीं, क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रही. नो, कंडीशन फॉल्स, दो ही कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो रही है, तो देर इज नो नीड टू ऐड दिस पर्टिकुलर कंट्री इन आवर फाइनल आंसर. ओके, फॉर अल्जेरिया, अल्जेरिया के लिए लाइक 23,817,884, लाइक ये कंडीशन तो मीटअप नहीं हो पा रही है, बट पॉपुलेशन मीट कर रही है. ओके, पॉपुलेशन तो क्राइटेरिया को मीट कर रही है, देन वी विल ऐड इन अवर फाइनल आंसर. फॉर एंडोरा, फॉर एंडोरा के लिए चेक करेंगे, एरिया तो बिल्कुल भी मीट नहीं कर पा रहा है, लाइक दैट. ओके, एज यू कैन सी, एंड ये भी दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है, ये भी नहीं कर पा रहा है क्राइटेरिया को भी. देन एंगोला, एंगोला में भी लाइक ये भी क्राइटेरिया फेल हो गया एंड यहाँ पर ये भी क्राइटेरिया को फेल कर गया. सो फाइनल रिजल्ट में हमारे दो ही कंट्रीज के नाम आएंगे. फर्स्ट वन इज द अफगानिस्तान एंड अल्जेरिया.
पॉपुलेशन ये है एंड पॉपुलेशन ये है। दोनों में से कोई एक कंडीशन का मीटअप होनी चाहिए, देन हम उसको अपने फाइनल आंसर में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर समटाइम्स अगर इंटरव्यू आपसे अगर पूछने लगता है लाइक व्हाई डिड यू यूज द और इंस्टेड ऑफ एंड समथिंग लाइक दैट, सो बिकॉज प्रॉब्लम इज ना सिंपली द कंट्री इज बिग इफ satisfy any one condition, or this is or condition, as you can see. Okay, so or is required here. Okay, okay, by mistakenly don't write down here like something like that, and don't first read the question carefully. Read the question, then write down the query part. Do not jump directly on a query part, like for example you read this line and write down the condition something like that, and directly this is and by mistakenly and you are trying to run this query. No, query will not be done. Okay, so yeah, uh, so today we learned like where clause and or operator, as you can see, and filtering the records using the conditions and selecting the specific columns and SQL interview logic as well. Okay, so let's submit. Time complexity wise, also it's good. Okay, there is no any extra something like that joins. We are not joins group by कुछ भी ऐसा हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी भी नॉर्मली रहेगी. So yeah, guys. So this was the complete explanation of the big countries problem. I hope you understood the concept clearly. And if this video helped you, then like the video, share with the friends, and subscribe to the channel. And comment which SQL problem you want next. See you in next SQL tutorial. Thank you so much.